Okay. Yes, sir. सर क्वेश्चन पूछना था वर्षित से। सर आपका बोर्ड ब्लर आ रहा है। अब ठीक आ रहा है क्या? यस सर, परफेक्ट है। ठीक है। हाँ पूछिए, व्हाट इज योर क्वेश्चन? व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। सर व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. Gitika weaves 20 baskets in 30 days. In how many days she will weave 120 baskets? Number of baskets. Number of days. Data is this. Question number 4. Question number 4 पूछा था आपने या 3? सर 4 पूछे थे। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. Yes. Required number of days bx. Then according to question we have this is your question of either direct variation or inverse variation. You have to think yourself. If number of baskets become more, then number of days also become more. Number of baskets become less, then number of days also become less. So this is your question of direct variation. In direct variation, x by y is equal to constant k. So according to question, 20 by 30 is equal to 120 by x. 26 are 120. Therefore, x is equal to 30 into 6. That is 180 days. It is an answer. Yes. Have any doubt in it? Have any doubt in it? No sir. Yes. Your question is this. Gitika weaves
20 baskets in 30 days. In how many days she will weave 120 baskets? I perform the same data, that number of baskets and number of days. Number of baskets is equal to 20, number of days is equal to 30. If number of baskets become equal to 120, then we have to evaluate the required number of days. Let required number of days be x. Then according to question we have 20 by 30 is equal to 120 by x. Therefore, x is equal to 30 into 6, that is 120. Means required number of days is equal to 120. आंसर लिखेंगे यहाँ required number of days is equal to 120. It is your answer. Have any doubt in it? No, sir. किसी बच्चा को कहीं कुछ डाउट्स है? Yes, sir. Question number 9 and 10. Yes. Sir, उससे पहले बता दीजिए. 9. कौन सा क्वेश्चन? 9. Question number 9 or 10. Yes. Question number 9. बच्चा है जी. Question number 9 is this. Question number 5 बता. At first you have to see question number 9 and 10. Yes, sir. Question number 5. A train 120 meter long took. कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 है जी? As we know that x is equal to distance by time, this must be equal to, your distance is 210 meter and time taken is 12 seconds. This is equal to 210 by 12. 3 4 are 12, 70 to 35. 35 by 2 meter per second. 71 by 2 meter per second, and this 35 by 2 meter per second is the right answer. $90 meter long tunnel. अच्छा 90 meter long tunnel. Yes. Question it is यहाँ देखेंगे. 90 meter long tunnel.
This is equal सर to, वो आंसर रॉन्ग था क्या? yes, this is equal to नहीं, this is equal to, your distance become equal to 210 plus 90. 90 meter long tunnel दिया हुआ है, 300 meter. SP equal to distance by time, so this will be equal to 300 by time equal to 12 seconds. 25 meter per second is the right answer. Here it is given in the question that a train 210 meter long took 12 seconds to pass and 90 meter long tunnel. Find the speed of the train. The speed of the train become equal to 25 meter per second. Because 90 meter long tunnel is given in a question. So total distance traveled is equal to this 210 plus 90, that is 300 meter. Okay? After that, Yes, sir. after that, using the formula SP equal to distance by time, this is equal to 300 by 12, that is 25 meter per second. अगर इसको किलोमीटर पर आवर में करना हो, क्वेश्चन में तो नहीं है दिया हुआ, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो इन किलोमीटर पर आवर इस तरह से हो जाता है. This is equal to 25 into 18 by 5. 5 by 25, 90 किलोमीटर पर आवर. अगर क्वेश्चन में रहता है कि व्हाट इज इट्स डिस्टेंस एंड व्हाट इज इट्स स्पीड यानी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, योर रिक्वायर्ड स्पीड बिकम इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना? यस सर. यस. सर क्वेश्चन नंबर 10. हाँ 10 का आंसर देखिए. सर क्वेश्चन बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. Sir, question number 5. ठीक. Ten it is. We have a train 270 meter long is running at 80 kilometer per hour. The speed of the train सर 80 kilometer per hour. This is equal to 80 into 5 by 18 meter per second. 9 बहुत blur आ रहा है. 200 by 9 meter per second. सही है सर. कोई बहुत ब्लर नहीं आ रहा है. Yes, sir. यस सर. कोई ब्लर नहीं आ रहा. देखो तो बहुत ब्लर आ रहा है. सर आपका बोर्ड तो ब्लर नहीं है. बोर्ड क्लियर है. सर आपका बोर्ड ब्लर नहीं है. Sir, clear है. Clear है. Network खराब है तुम्हारा. Yes, देखिए speed of a train is equal to 80 kilometer per hour. This is equal to 80 into 5 by 18, 200 by 9 meter per second. यहाँ डेटा तैयार करेंगे इस तरह से हम लोग. डिस्टेंस इन मीटर, यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन इन सेकेंड. Two hundred by 9. Time taken is equal to 1 second. Your again distance is 400. Then what should be the time taken? Let सर टाइम टेकन के नीचे क्या लिखा है? in second. Let required time taken be सर आपका वॉइस नहीं आ रहा. सर का वॉइस आ रहा है. let required time taken be x second.
Let required time taken be x second. Then you have the same result. If distance is increased, then time is also being increased. This is your question of direct variation. Then, according to question, we have in direct variation x by y is equal to constant k. So this will be equal to 200 by 9 divided by 1 is equal to 400 by x, or 200 by 9 is equal to 400 by x. That is 2. Therefore, x is equal to 9 into 2. That is 18 seconds. It is your answer. Required time taken is equal to 18 seconds. यहाँ आंसर लिख देते हैं. That is required time taken is equal to 18 seconds. It is your answer. Have you any doubt in it? सर एक बार क्वेश्चन नंबर 8. पहले इस क्वेश्चन को समझिए. It is given in the question that a speed of a train is equal to 80 km per hour. Here a speed of train is given as 80 km per hour. This is equal to 80 into 5 by 18. This will be equal to 200 by 9 meter per second. After that, you have to evaluate the required time taken to complete 400 meters distance. Let required time taken be 8 seconds. Then according to question, 200 by 9 divided by 1 is equal to 400 by x, और 200 by 9 is equal to 400 by x. ये 2 से कैंसिल हो गया. Hence x is equal to 9 into 2, that is 18 seconds. It is your answer. सर क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे थे ना. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5. पहले 5 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. पहले 5 then 8. ओके, सारे बच्चे नोट कर लिए. यस सर नोट कर लिए. किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट है? यस, 5 का आंसर देखिए. सर 8 भी बता दीजिएगा. हाँ, बता देंगे. 5. Question number 5. A train 280 meter long is running at a speed of 42 km per hour. How much time will it take to pass a man standing on a platform? We have a speed of a train is equal to 42 km per hour. This is equal to 42 into 5 by 18. 6 is 18, 6 7 is 42, 35 by 3,
मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ एक डाटा तैयार करेंगे on the basis of the given question. Distance in meter. Time taken in second. In second, 35 by 3. Time taken is equal to 1 second. If your distance become 280 meters, then what is your required time taken? Yes, let required time taken be x second. यहाँ लिखेंगे let required time taken be x second. Then according to question we have more is distance, then more is time. Less distance, time is less. So this is your question of back variation. Hence 35 by 3 divided by 1 is equal to 280 by x, or 35 by 3 is equal to 280 by x. Therefore x is equal to 3 into 280 by 35. 7 5 is 35, 7 4 is 28 40, 5 8 is 40, 8 3 is 24. Required time will be equal to 24 seconds. It is your answer. Required time taken will be equal to 24 seconds. Okay. सारे बच्चे इसको नोट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए पहले. Yes. Sir, 6 sequence wise. 6. Question number 6 is same. Question number 6 is same, just like as question number ये तो बहुत इजी है. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. एसपी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्लियर ए प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग इफ इट्स स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. ये सॉल्व आप कर दें. सारे बच्चे नोट कर लीजिए. Yes, sir. सारे बच्चे नोट करेंगे. रफ कर दें. हेलो. Yes, sir. सारे बच्चे नोट कर लिए. रफ कर दें. Yes, sir. Yes, sir.
Question number 8. How long will a train 120 meter long take to clear a platform 130 meter long if its speed is 50 km per hour? The speed of a train km per hour, 50 into 5 by 18, 9, 25, 125 by 9 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ हम लोग डेटा तैयार करेंगे. डिस्टेंस इन मीटर, टाइम टेकन in second. Time taken in second. Distance is 125 by 9. Time taken is 1 second. If your distance become 250 meters, then what will be the required time taken? यहाँ लिखते हैं इस तरह से, let required time taken be required time taken be 8 seconds. Then according to question we have, it is a question of time variation 125 by 9 divided by 1 is equal to 250 by x, or 125 by 9 is equal to 250 by x, or 25 to the 250, therefore x is equal to 18. After doing cross multiplication, we have the same result. X is equal to 18. That is 18 seconds. That is आंसर यहाँ लिख देते हैं. That is required time taken 18 seconds. Very good answer. Have you any doubt in it? Have any doubt in it? सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन नंबर 8. Have any doubt in it? क्या? Have any doubt in it? No, sir. Yes. और भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट्स है? No, sir. Have any doubt in any question? No, sir.
यस No, sir. अब तो वर्कशीट 3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, But, sir. sir, mute, sir. तुम भी म्यूट करो. सारे बच्चे होमवर्क लिखेंगे वर्कशीट 3 विथ एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रेन टीचर्स क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड all remaining questions related with direct and inverse variations, that is hard question also. सारे क्वेश्चंस का एवल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग. 1 से 2 दिन के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. मैं बच्चों से जानना चाहूँगा कि सारे बच्चे को सारा क्वेश्चन समझ में आया है अच्छी तरह से या नहीं? Yes, sir. किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स नहीं है ना? No, sir. चलिए, वेरी गुड वेरी गुड. सारे बच्चों से सारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. सारे बच्चों को स्नैप होमवर्क पर सारा क्वेश्चन देखना चाहिए. क्वेश्चन आंसर सब मैं भेजता हूँ. सारे बच्चों को वीडियो देखना चाहिए जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके. जो बच्चे नहीं देखते हैं वो बच्चे साइफर हो जाएंगे, वो सीख नहीं पाएंगे, बेसिकली मैथ्स में वीक हो जाएंगे. इसलिए सारे बच्चों को चाहिए कि सीरियसली मैथ्स को टैकल करें, सीरियसली मैथ्स को करें. हर एक क्वेश्चन को 3 बार ट्राई करें सॉल्व करने के लिए. 3 बार के बाद जब नहीं सॉल्व होता है तो हमसे पूछ लें. आप जितना ट्राई करेंगे उतना ही काबिल बनेंगे. बहुत सिंपल सी बात है. ओके, हेलो, मीटिंग ओवर करें. Yes, sir. टाइम इज ओवर. और भी किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बोलिए. हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 3?